A very good morning, students. This is Dr. Nimulanshu here to discuss with you the various concepts of chemical bonding. So, yesterday we have discussed about the formation of CH4, C2, NH3 molecule, H2O molecule, and also we have discussed the formation of C2H4 molecule. So, we have also considered the sp2 hybridization, that is hybridization taking place between s orbital and 2p orbitals and 1p orbitals remaining unhybridized. ये सब हम लोग कल पढ़ लिए थे. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है और एक मोलिक्यूल दैट इज BH3 मोलिक्यूल, दैट इज बोरॉन हाइड्राइड. इट इज कॉल्ड बोरॉन हाइड्राइड. सो क्या पढ़ेंगे हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ BH3 मोलिक्यूल. सो BH3 मोलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है? बोरॉन. सो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5. दैट इज 1s2, 2s2 and 2px 1, 2py 0 and 2pz also 0. ओके, सो ऐसा हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन, स्पिन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा. एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, ओके, और 3 इलेक्ट्रॉन जो है और 3p ऑर्बिटल्स में से ओनली 2px ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा. Now, when boron will get excited, it will shift its electron from this orbital to this orbital. Okay. So what will happen? This is the same case. It will remain as it is. And यहाँ पे 2s में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और 2p में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, that is 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और 2py में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और 2pz खाली रह जाएगा. ओके, नाउ दिस विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडेशन. दिस विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है ना, तो अभी क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन होने से क्या होगा? शेप क्या होगा? शेप होगा दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. सो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसे होगा? देखो, ये है एक ऑर्बिटल, एक लोब, ये है दूसरा लोब और ये है तीसरा लोब. ओके, नाउ दिस हैज फॉर्म ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री विथ 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल. ओके, अभी जो है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आएगा, उसका एटॉमिक नंबर है 1, दैट इज 1s1. So hydrogen will come and similar is the case, जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे. ये हाइड्रोजन दैट इज उसका इलेक्ट्रॉन हम लोग क्रॉस, मतलब आई इंडिकेट दिस इलेक्ट्रॉन विथ क्रॉस साइन. सो दिस इज 1 हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑल्सो अनदर हाइड्रोजन विथ क्रॉस साइन आई एम शोइंग. सो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्योंकि हेड-ऑन कोलिशन हो रहा है with the s orbital of hydrogen atom is having of head-on collision with the sp2 orbital of sp2 hybrid orbital of boron. S orbital, I repeat, s orbital of hydrogen atom is having head-on collision with the sp2 hybrid orbital of boron. So क्या हो जाएगा? शेप, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड. ओके, यहाँ पे भी हो जाएगा सिग्मा और यहाँ पे भी हो जाएगा सिग्मा, लेकिन ये सिग्मा थोड़ा डिफरेंट है. ये है sp2 सिग्मा, ये है sp2 सिग्मा और ये भी होगा sp2 सिग्मा. एंड द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री एंड द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये है बोरॉन, ये एक हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, and bond angle is 120 degree. Okay, so this is having trigonal planar geometry. This is having trigonal planar geometry. Okay, so this is called trigonal planar geometry. Trigonal planar geometry. Okay, so ये हो जाएगा शेप. This is the shape. This is how we have discussed the shapes and hybridization of BH3 molecule. This is how we have discussed the shapes and hybridization of BH3 molecule.
अभी देखो, अभी अगर तुम लोग चाहो तो ऐसे इसको ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि पीजेड जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, उसको अगर चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो। ओके, और इफ यू डू नॉट वांट, ओके, इट्स ओके, देन ऑल्सो यू कैन राइट इट, कीप इट लाइक दिस हियर ऑल्सो। ओके, so if you do not want, you can keep it like this as it is, as I have shown earlier. अगर नहीं चाहो तो इसको ऐसे भी अगर चाहो भी तो भी रख सकते हो, अगर नहीं चाहो तो भी रख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट अभी आ जाएगा हम लोग का मॉलिक्यूल जो है अंडर डिस्कशन, वो है फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, सो उसका फॉर्मूला क्या है इथाइन मॉलिक्यूल का? देखो क्या होता है फॉर्मूला इथाइन मॉलिक्यूल। जैसे तुम लोगों ने क्लास 19 में पढ़ा होगा, इथाइन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो तुमको सबको याद है कि इथाइन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C2H2। क्या है फॉर्मूला? C2H2, जहाँ पे सेंट्रल एटॉम है कार्बन, और यहाँ पे एक बात है, जैसे कि C2H4 में था, यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब एक कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन, आई रिपीट, यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब एक कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन। ओके, सो अभी क्या होगा, देखो कार्बन का, एक कार्बन में क्या हो रहा है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2, 2s2, 2px, 1, 2py1 एंड 2pz0। अभी कार्बन जब एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्टिंग करेगा यहाँ पे। ओके, तो क्या होगा, 1s2, 2s1, 2px, 1, 2py1 एंड 2pz1। सो कैसा होगा कॉन्फ़िगरेशन? ऐसा होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑफ 2s एंड दिस इज ऑफ 2s एंड दिस इज 2px, और 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ओके, सो देखो कैसा होता है, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में और एक इलेक्ट्रॉन। ओके, सो अभी क्या, ये है हमारा 2p। सो अभी क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन विल टेक प्लेस, sp हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस। अभी तुम लोग ये भी सोच रहे होगे कि एक बार सर बोलते हैं कि एक कार्बन में sp3 हो रहा है, तो उसी कार्बन में दूसरा मॉलिक्यूल में sp2 हो रहा है, उसी कार्बन में तीसरा मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडेशन हो रहा है। So how we will remember that? You have to remember because this is an experimental fact. This is an experimental fact, and that for that reason you have to remember that for which carbon will undergo what type of hybridization. Which carbon will undergo what type of hybridization? Okay. So देखो क्या हो रहा है, तो क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन से शेप क्या हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा, शेप हो जाएगा लीनियर शेप। ओके, जैसे कि एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। सो सेम कॉन्सेप्ट दूसरा कार्बन में भी हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट दूसरा कार्बन में भी होगा, तो इसमें भी आ जाएगा, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और इसमें भी क्या होगा कि ये हो जाएगा तुम्हारा लीनियर शेप। और बाकी जो 2 p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड, वो ऐसा रहेगा, एक p ऑर्बिटल ऐसा रहेगा। तो दूसरा p ऑर्बिटल ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, टू अवॉइड और टू फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा में भी एक ऐसा हो जाएगा दूसरा कार्बन में, और इसमें भी एक ऐसा बन सकता है। ओके, सो विथ 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन द py and pz ऑर्बिटल। ओके, व्हाटएवर यू कॉल इट बाय द नेम py and pz ऑर्बिटल। अभी देखो 2 हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना है, 1, दैट इज 1s1। सो क्या होगा, हाइड्रोजन विल अंडरगो हेड ऑन ओवरलैपिंग विथ दिस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज अनदर सिग्मा बॉन्ड। अनदर हाइड्रोजन क्या आएगा, ऐसा आ सकता है हाइड्रोजन, तो ये भी बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज दिस इज ए हेड ऑन ओवरलैपिंग। सो दिस इज sps sigma, and this is also sps sigma. Okay, because the overlapping is taking place between the s orbital of hydrogen atom and the sp hybrid orbital of carbon atom.
The overlapping is taking place between the s orbital of hydrogen atom and the sp hybrid orbital of carbon atom. तो नेक्स्ट क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ क्या मतलब क्या कर सकता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है। तो इसको ऐसे इसीलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग में शामिल हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा, लेकिन ये ओवरलैपिंग थोड़ा डिफरेंट होगा, ये होगा sp sp सिग्मा, sp sp सिग्मा। अभी देखो जो जबकि ये लिनियर मॉलिक्यूल हो मतलब हो गया, इसके ऑपरेशन होने से शेप क्या होगा, लिनियर, तो मॉलिक्यूल का एंगल कितना होगा, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, CCH बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, दैट इज दिस बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, अभी देखो क्या हो रहा है, अभी जो p ऑर्बिटल है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, that can overlap sidewise, unhybridized p orbital of this carbon can overlap sidewise with the unhybridized orbital of this carbon। सो क्या हो जाएगा हमारा एक में ये कर सकता है ओवरलैप। ओके, ये कर सकता है, हम मैं मतलब आई एम गिविंग लाइक above and below the plane because the electrons are continuously in motion, so electrons sometimes it may come over here, sometimes it may come over here, that is why I have given that two, but the fact is that the pi bond will be only one। तो यहाँ पे ये भी कर सकता है इस कार्बन के साथ, ये भी कर सकता है। तो हमको कितना पाई बॉन्ड मिल रहा है, एक पाई बॉन्ड मिल रहा है यहाँ पे और एक पाई बॉन्ड मिल रहा है यहाँ पे। ओके, so I am getting 1 sigma between 2 carbon and 2 pi bond between 2 carbon। I am getting 1 sigma between 2 carbon and 2 pi bond between 2 carbon। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, so इसको लिख रहे हैं, और you can write it like this, और you can write it like this। so कैसे लिखेंगे देखो, so ये है एक कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें एक बॉन्ड हाइड्रोजन है, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज ऑल्सो सिग्मा। अभी क्या है, दो पाई भी हो रहा है, एक पाई ऊपर देंगे तो एक पाई नीचे भी दे सकते हैं। ओके, अभी जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो है, ये एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ओके, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ जो है, ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, यू कैन टेक दिस एज ए बॉन्ड लेंथ एंड दिस आल्सो एज ए बॉन्ड लेंथ, ये हो जाएगा 108 पिकोमीटर। ओके, और इस बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ will be 120 picometer। ओके, so that these values you have to keep it in mind, because if you do not give these values you will not get full marks। okay, so my dear students, ये ध्यान रखो, if you have to give these values, because unless you give these values you will not get full marks। okay, so क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है that will be 108 picometer, and the carbon triple bond length will be 120 picometer। okay, so this way also we can represent, this way also that is necessary, because that is the orbital concept and that is the general concept। okay, so if you are asked to discuss the shapes and hybridization of C2H2 molecule, then you have to give all these things whatever I have said, and whatever I have said, whatever I have drawn in the board, you have to give all these things, and also whatever I have said, that you have to give it in the form of sentences or statements। okay, so you prepare your notes on your own, that is you consult any NCERT book, the notes it is very nicely written there, you can consult NCERT book and you can prepare a notes of your own। even if problem persists still, you can contact me, you are free to ask me again and again each and every questions regarding any topic whatever I have discussed। okay, so next we will go to, ये हो गया हमारा खेल खत्म regarding hybridization involving s orbital, hybridization involving p orbital, this is all about।
So we have considered the hybridization involving one s orbital and 3 p orbital. That is, we will get sp3 hybridization. The geometry is tetrahedral geometry and the bond angle is 109.5 degree. 109.5 degree. Because of the presence of lone pair electron in NH3 and H2 molecule, the geometry gets distorted and the bond angle has been reduced. Next, we have considered the hybridization of one s orbital, one 2s orbital and two 2p orbitals. Okay. So that in that case, we have discussed the formation of C2H2 molecule, BH3 molecule. So we will get trigonal planar geometry with the bond angle is 120 degree. And then we have discussed the hybridization involving one 2s orbital and one 2p orbital. The remaining p orbitals will remain unhybridized. So the bond angle will be 180 degree and the carbon-carbon triple bond length will be 120 degree, 120 picometer, 120 picometer. So that we have discussed till now. Now we will move to the hybridization involving one s orbital, 3 p orbital and 1 d orbital. Okay. So hybridization involving s, p and d orbitals. So let's start. Let's see how it goes. तो देखो हाइब्रिडेशन इन्वॉल्विंग एस पी एंड डी ऑर्बिटल, इसको समझने के लिए ये बेटर होगा इफ वी टेक वन मॉलिक्यूल इनटू कंसीडरेशन. इट इज बेटर इफ वी टेक वन मॉलिक्यूल इनटू कंसीडरेशन. ओके. So hybridization involving sp and d orbital. Next point is hybridization involving sp and d orbitals. Okay. So the molecule which we will consider is pF5 molecule. That is phosphorus pentafluoride. Okay. So that we will discuss. In phosphorus pentafluoride, the central atom is phosphorus. The central atom is phosphorus. So phosphorus का atom number कितना है? 15. That is we can write neon. Because if we write neon, so I will show you how it has become neon. That is 1s2 2s2 2p6. फिर कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन? 6 to 8 plus 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया. अभी देखो 3s2 3px1 3py1 3pz1 एंड 3d जो है वो रह गया 0. सो इस यहाँ तक देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. और नियॉन देन 3s2 3px1 3py1 3pz1 एंड 3d 0. ओके. सो क्या हो जाएगा? ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 इलेक्ट्रॉन. 3px will contain 1 electron, 3px will contain 1 electron, 3py will contain 1 electron and 3pz will contain 1 electron. And 3d will remain empty. 3d will remain empty. Okay. So 1 2 3 orbital, 4th orbital and 5th orbital. This will remain empty. Now when phosphorus gets excited, okay, because it will get excited and in the presence of fluorine which is coming surrounding it, so 1 electron will transfer from s orbital to d orbital. Okay, s orbital to d orbital. So we will get neon. Then we can get 3s में 1 electron, 3p we have 3 electrons, 3p we have 1 2 3 electron, 1 2 3 electron, and 3d also will contain 1 electron, that is which has been shifted from
फ्रॉम 3s ऑर्बिटल्स. ओके, सो ये बन गया हमारा फॉस्फोरस का, ये बन गया हमारा फॉस्फोरस का एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस. ओके, दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस 3s electron, 3p electron and 3d electron will undergo hybridization, so क्या होगा, sp3d hybridization, sp3d hybridization. okay, sp3d hybridization, so sp3d hybridization. okay, so sp3d hybridization होने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होगा, so we will get 5 hybrid orbitals because 1s orbital, 3p orbital and 1d orbital is taking part in the hybridization. So we will get 5 hybrid orbital, and that 5 sp3d hybrid orbital will be directed towards the 5 corners of a trigonal bipyramidal. These 5 hybrid orbitals will be directed towards the 5 corners of a trigonal bipyramidal geometry. Okay, so कैसा होगा देखो, तो हम इसको हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं. So now what will happen, you see how the molecule will take its shape. So ये हो गया, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ये हो गया फॉस्फोरस का एक ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरा ऑर्बिटल, ये हो गया तीसरा ऑर्बिटल. So this will now have trigonal bipyramidal geometry. ये हो जाएगा ऊपर में एक, ओके, ये हो जाएगा नीचे एक. ओके, so this is what is called trigonal bipyramidal geometry. okay, this is what is called trigonal bipyramidal geometry. okay, this is what is called trigonal bipyramidal geometry. okay, with 1 electron each in the hybrid orbitals, with 1 electron each in the hybrid orbitals. अभी जो है फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, दैट इज 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 and 2pz1. This 1 electron empty, this is unpaired electron. This unpaired electron will overlap with the electron of this phosphorus. So what we will get, this is 1 fluorine. Okay, so it is, I am giving it cross. This is another fluorine, I am giving it another cross. This is another fluorine, I am giving it another cross. इसको हम दोबारा लिखेंगे, जैसे न्यू हो रहा है. सो हमको ये पता है कि ये होगा मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप. सो दिस इज 1s ऑर्बिटल, 1p1 sp3d hybrid orbitals. okay, now this will contain this also, okay. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दिस विल कंटेन आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन, दिस विल कंटेन आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन, दिस विल कंटेन आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस विल ओवरलैप विद द 2pz इलेक्ट्रॉन ऑफ f atom. This will overlap with the 2pz electron of f atom. So how the overlap will take place? How the overlap will take place? This one like this. Here also overlap will take place. This one like this. Here also overlap will take place. This one also like this. Here also overlap will take place like this, and here also overlap will take place. सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे. तो कैसा होगा शेप जो है, it should be a very symmetrical one. It should be a very symmetrical one. Okay.
So this is how the shape will be there with one electron. Okay. So now this is the geometry, and this is called trigonal bipyramidal geometry. This is called trigonal bipyramidal geometry. Okay, this is called trigonal bipyramidal geometry. So now this trigonal bipyramidal, this is trigonal bipyramidal geometry, or we can write it like this: P, it will have one F, it will have one F over here, it will have one F over here, it will have one F over here, it will have another F over here. So the geometry is, this is called trigonal bipyramidal geometry. Okay. Now these three fluorine atoms will be directed towards the three corners of an equilateral triangle, and these two fluorine atoms will be at perpendicular to this equilateral triangle. This F atom will be at perpendicular to the three F atoms of the equilateral triangle. So the F atom which is directed towards the three corners of equilateral triangle is called equatorial F bond. This is called equatorial F bond. This is called equatorial F bond. Of course, I forgot to say one thing. It will be the sigma collision, sigma collision, sigma collision, sigma collision, and also this is sigma collision. And the sigma collision is of what name? It will be between p orbital of fluorine is overlapping with the sp3d. So it will be p sp3d. This will also be p sp3d. This will also be p sp3d. This will also be p sp3d. Okay. This will also be p sp3d. Okay. So this is, we have got the PF5 molecule. Now this three fluorine atom will be directed towards the three corners of an equilateral triangle, which are called equatorial fluorine atoms. And these two fluorine atoms will be directed towards will be at perpendicular to these equatorial bonds. So these are called axial. This is also called axial. Okay. So this fluorine is directed towards these three fluorine atoms are directed towards the three corners of an equilateral triangle with bond angle is 120 degree. With bond angle is 120 degree. Okay. And this fluorine atom, which is at axial position, is at right angles to this equilateral fluorine. So this angle will be this angle is 90 degree. Okay, this angle is 90 degree. So this is about the formation of PF5 molecule. Now my dear student, here one thing I have to tell you, that this PF bond, equatorial axial PF bond, is somewhat slightly longer than, bond length will be slightly longer than PF equatorial bond. That is, this bond is 158 picometer. This bond length is, PF bond length is equal to 158 picometer, and this PF bond length is equal to 153 picometer. So these are by electron diffraction studies, it is seen that the axial PF bond is 158 picometer, whereas the equatorial PF bond is 153 picometer. Equatorial PF lie at the three corners of an equilateral triangle with bond angle 120 degree, whereas the axial PF bond angle is 90 degree, because these are at right angles to the plane of equatorial bonds. So PF equatorial bond is having bond length 153 picometer, whereas the PF axial bond length is 158 picometer.
by electron diffraction studies revealed that the PF axial is 158 picometer and the PF equatorial bond length is 153 picometer. Okay, but by NMR studies, by nuclear magnetic resonance studies, you might be knowing this is a new term to you people, so don't get afraid, just to know the name: electron diffraction studies and NMR studies. Electron diffraction studies tells that or reveals that PF axial bond length is 158 picometer, whereas the PF equatorial bond length is 153 picometer. And whereas the NMR studies says that all the bond lengths are of same length. All the bond lengths are of same length. Okay. So this is why, because electron diffraction studies takes the instantaneous picture of the molecule. Electron diffraction studies takes the instantaneous picture of the molecule, whereas NMR takes comparatively more time in which the axial and equatorial F atoms can interchange their positions. I am saying again, 3 F atoms are directed towards the 3 corners of an equilateral triangle. 3 F atoms are directed towards the 3 corners of an equilateral triangle. Okay? 2 F atoms with bond angle 120 degree. 2 F atoms are at right angles to this plane, to this equatorial plane. So this F atom will make 90 degree with this F atom. Okay. So this F atom is called axial F atom, whereas this F atom is called equatorial F atom. This atom is equatorial F, this is equatorial F, this is equatorial F. Similarly, here this F is called axial F, this F is also called axial F. Okay. So equatorial bond angle है 120, axial bond angle है 90 degree with the equatorial, because it is at right angles to the plane. Now इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी है, जब भी हम लोग कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वी टेक इट फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस. सो वहाँ पे जाके देखा है हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी जो है वो बोल रहा है कि PF axial bond length is 158 picometer. PF axial bond length is 158 picometer. And the PF equatorial bond length is 153 picometer. That is, it is slightly smaller than this bond length. This equatorial bond length is slightly smaller than this bond length. But recent NMR studies have revealed that all the PF bond lengths are of same size, are of equal size, because NMR takes comparatively more time in which the axial F and equatorial F atoms can interchange their position. Okay, electron diffraction studies says that PF equatorial bond length with the PF bond, which is actually in equatorial plane, these are of 153 picometer length, whereas the PF axial, it is slightly higher. It is of the bond length 158 picometer. But the NMR study says that this bond length, all the 5 PF bond lengths are of equal size, because in NMR, what happens? In NMR studies, what happens? NMR takes comparatively more time. And when NMR takes comparatively more time in which the axial and equatorial F atoms can interchange their positions. In which the axial and equatorial F atoms can interchange their positions. Okay. Next we will discuss the formation of another molecule that is having hybridization involving s orbital, p orbital and d orbital. So next we will go to sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization. Okay. So sp3d2 हाइब्रिडेशन होने से क्या होगा
sp3d2 हाइब्रिडेशन कैसा होगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक s ऑर्बिटल, 3p orbitals and 2d orbitals are getting involved, and the molecules will have, and this geometry I said this geometry is called trigonal planar geometry. This geometry is called trigonal bipyramidal geometry. Trigonal bipyramidal geometry. Okay, this geometry is called trigonal bipyramidal geometry. So ऐसा होगा geometry. So ऐसा होगा जैसे कि ये है एक F है, ओके, ये एक F क्लोरीन, सॉरी फॉस्फोरस, क्लोरीन, और एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है. ओके, so this is trigonal bipyramidal geometry. So now we will consider hybridization involving 1s orbital, 3p orbital and 2d orbitals. Okay, hybridization involving 1s orbital, 3p orbitals and 2d orbitals. Okay, so let's see how it happens. तो उसके लिए हम लोग एक मोलिक्यूल लेंगे, दैट इज SF6 मोलिक्यूल. SF6 मोलिक्यूल. ओके, सो लेट्स सी. तो एक s orbital, 1s orbital, that is suppose this is 3, so sulfur SF6 molecule. Okay, तो सेकेंड में सल्फर का है 16, that is we can write neon, then 3s2, 3px, sorry 2, 3py1, 3pz1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 3d is 0. ओके, सो क्या होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और px में 3px में 2 इलेक्ट्रॉन है. सो ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन है, pz में 1 इलेक्ट्रॉन है अभी, और 3d जो है उसकी पूरा खाली है. ओके, 3d जो है वो पूरा खाली है. 1, 2, 3, 4, 5. Now when sulfur gets excited, it will jump is 1 electron from here to here and 1 electron from here to here. Okay, so क्या हो जाएगा, s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3px में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 3py में भी 1 इलेक्ट्रॉन एंड 3pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन, और d जो है 3d जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि जाम किया है एक्साइटेड स्टेट में. So 1, 2, 3, 4, 5 orbitals we have. So this is sp. Now ये हो गया. Now the hybridization will take place, and hybridization is sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization. Okay, sp3d2 hybridization. Okay, so sp3d2 hybridization होने से शेप जो है वो हो जाएगा हमारा octahedral geometry. This is the shape is of octahedral geometry. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6 with 1 electron each in the hybrid sp3d2 hybrid orbitals. Okay, so this is called octahedral geometry. Okay, this is called octahedral geometry. Okay, or you can also write it for in case of sulfur. What happens in case of sulfur? And this geometry is called octahedral geometry. And the bond angle is 90 degree. ओके, अभी देखो क्या हो रहा है. अभी फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का है 1s2. फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का है 9 एटॉमिक नंबर. 1s2, 2s2, 2px
2, 2py 2 and 2pz 1. This single electron will overlap with all these electrons. So यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा giving rise to sigma bond. यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा giving rise to another sigma bond. यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे आ जाएगा और एक फ्लोरीन giving rise to another sigma bond. Okay, this is cross. I am showing it in cross. So it's better if I rub this one. It's better if I rub this one. So ये हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा. Okay, so this is one sigma. This is another sigma. Here it will be another sigma. Okay, so with one electron. This is another F atom with another F electron, another F atom with another F electron, and this is another F atom with another electron. So this is also sigma, this is also sigma, and this is also sigma. And the sigma is having now different name. This is the sigma of what? Sigma of P and sp3d2. Sigma is of P and sp3d2. All these sigma are of P orbital of F atom with the sp3d2 orbital of sulfur atom. P orbital of F atom is having a head-on overlapping with the sp3d2 hybrid orbital of sulfur atom. So this angle will be 90 degree. All the angles will be 90 degree. Okay, and the bond will be like this. Okay, or we can draw it in this way also. Or we can draw it in this way also. How we will draw? This is sulfur. This is one fluorine. This is another fluorine. This is another fluorine. This is another fluorine. Okay. This is one fluorine. This is another fluorine. So this is octahedral geometry. This is called octahedral geometry. Okay. And this is called octahedral geometry. So the bond angle is will be bond angle is 90 degree. Bond angle is 90 degree. Okay. So this is the shape of SF6 molecule. This is the shape and geometry of SF6 molecule using the hybridization concept. Now with all these discussions, we are left with only one hybridization, that is hybridization involving 1s orbital, 3p orbital and 3d orbital. 1s orbital, 3p orbital and 3d orbitals. And for that I want to give you one homework. You try to solve it, otherwise I will solve it in my next class. That is IF7 molecule. That is IF7 molecule. So this is your homework, IF7 molecule. Okay. So take it as your homework. You try to solve it. The concept is same. The concept is exactly the same, but a slight difference is there that you have to modify. So you try to do it on whatever I have said, whatever I have given in the blackboard. You try to keep it in your copy, write it down in your copy, and whatever I have said, that you consult with any NCERT book and write a notes of it, because you have to give notes with the sketch, then only you will get full marks. If any problem is there, if any query is there, you feel free to ask me. Okay, I have given my number, WhatsApp number to all of you. You are free to ask me. So with this, I want to end up my session here today. Thank you very much, my dear students, for your patience hearing. Okay, bye.